चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप लोग एकदम मज़े में होंगे। एंड बताइए क्या टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं? राइट माय डियर चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। इन सब के बारे में आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। फाइनाइट मीन्स लिमिटेड और बाउंड। No sentence can be framed without a finite verb. Finite verbs are bound by persons, numbers of the subject. So for example, the girl dances, the girls dance, they play carom, he plays carom. So such verbs can change their forms when their tense is changed. For example, our teacher taught the lesson. Our teacher was teaching the lesson. So in the second sentence, taught changes to teaching. Finite verbs are independent as they do not depend on any other verb to complete their meaning. Okay, example देखिए, he works hard, complete meaning. Verbs note देखिए, आपके पास एक नोट है जिसमें लिखा है कि verbs that can be used in all the 12 tenses are finite verbs, जो 12 के 12 tenses में यूज हो सकती है। प्रैक्टिस सेशन है आपके पास। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट द फाइनाइट वर्ब्स इन द ब्लैंक। आप ब्लैंक्स में यूज करिए उन्हें। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, these verbs are not bound or limited by the numbers or persons of the subject. Verbs such as to play and ing verbs such as playing are called non-finite verbs. A non-finite verb does not make or mark a complete sense on its own. It has to depend on a finite verb for making sense. तो ये dependent है finite verb के ऊपर। For example, the old man likes to walk. The children love to play. He went out for shopping. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Non finite verbs are like ये main verb के ऊपर depend हो गए, है ना? Glad to know infinitives are divided into infinitives and bare infinitives. And non-finite verbs are of three kinds. They are infinitive, participle and gerund. So infinitive के बारे में, this is a non-finite verb that indicates an action and it is used as a noun or as an object after the preposition to. It is formed by using the preposition to with the root verb. For example, she loves to cook. जहाँ पे आप to देखें मेन बेसिक वर्ब के साथ, वो infinitive verb होती है बच्चों। He wants to play, ठीक है। To forgive is divine. So the verb examples show that the infinitive can act as noun and it can be a subject or an object of a verb. It can also be used as a complement of the verb or an object. Bare infinitives are those infinitives that do not use the preposition to. वहाँ पे to के साथ verb नहीं मिलेगी आपको। So these bare infinitives comes after words such as can, may, shall, will, must and soon. For example, you must play as told and Razan made them watch. She saw me leave. My mother let me go. तो यहाँ पे verb देखी but ऐसे to के साथ नहीं है। Use of infinitives. Infinitives can be used to join sentences. For example, he went to gym. He wanted to do exercise. He went to the gym to do exercise. They can be used in place of so that. For example, he is so occupied that he cannot go. He is too occupied to go. Practice session number 2. Rewrite each sentence with to plus infinitive or infinitive phrase. And we have now participles. These verbs that are formed by adding ing to the root verb are called participles. They are verb adjectives. For example, the racing bike skidded and the slept on a folding bed. Participles have three forms. One is present participle. Present participle can be formed by adding ing to the root verb. Coming down the stairs, he met his friend. Watching the television, he fell asleep. और past participle में क्या होता है? These can be formed by adding ed. देखते हो ना, बहुत सारी verbs में ed as हो जाता है, तो ed आप लगा के past participle बना देते हो। Applauded by the audience, he raised his hand. ये example है इसका। And praised by the teacher, she cheered. Perfect participle में आपका
This can be formed by adding ed or en to the verb having. यानी एग्जाम्पल में देखिए, हैविंग डन हर वर्क शी इंजॉयड टेलीविजन, यहाँ आपने ed ऐड किया. हैविंग फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट आई स्लेप्ट. राइट. प्रैक्टिस सेशन आपके पास नंबर 3. पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Gerund, this is kind of nouns which are used as nouns of called gerunds. They are also known as verbs nouns, and present participle functioning as a noun is called gerunds. And speaking is better than keeping silent is an example जिसमें subject है ये आपका, and they took part in boxing, the object है. तो दोनों तरह से यूज़ होता है ये. प्रैक्टिस सेशन नंबर 4. राइट द सुटेबल, जो भी आपके पास ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं उनको बनाकर लिखिए. एंड एक्सरसाइजेस हैं आपके पास जिसमें आपको अटेम्प्ट करना है जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है. ए पार्ट में कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, इंफिनिटिव्स एंड जेरेंड्स, एंड चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव्स इन बी पार्ट. एंड एक्टिविटी जोन में आपके पास है डिवाइड द क्लास इनटू 2 टीम्स. द टीचर विल रीड आउट सेंटेंसेस फ्रॉम कार्ड्स containing verbs. Each team will guess whether each verb is finite or non-finite, and teams will score points for correct identifications and discuss why each verb fits the sentence. And while doing this activity, have fun, bachcho, enjoy.